Hi guys, welcome back to my channel. I am Ayushi. I really hope you are doing amazing. So if you are new here, please take a moment to subscribe to my channel and hit the notification bell. Every time I upload a new video, I'm trying to be consistent here on YouTube. So please छोटा सा सपोर्ट देके बेल नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिल जाए. एंड यस, इन माई टुडेज वीडियो आई हैव क्रिएटेड दिस अमेजिंग लुक एंड आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो. ये लुक मैंने क्रिएट किया है वेडिंग गेस्ट मेकअप काइंड ऑफ अ लुक, क्योंकि मुझे अटेंड करनी है अपनी बेस्ट फ्रेंड कम वेरी गुड फ्रेंड की एंगेजमेंट फंक्शन. एंड सो इफ यू वांट टू नो हाउ आई डिड दिस लुक देन प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग. एंड यस, विदाउट एनी जस्ट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. लेट्स गो. So the very first I'm gonna apply some moisturizer. This is the Nivea soft moisturizer. I'm gonna hydrate it a lot. मैं बहुत सारे क्वांटिटी में इसको अप्लाई करूँगी अपने स्किन पर. Now I'm gonna apply this lip balm. This is Diwali Herbals lip balm. क्योंकि इस टाइम पे मेरी लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो रहे हैं. सो अब मैं अच्छा सा इसको लगा लूँगी. Now time for the primer. I'm gonna put this Nykaa Prep and Prime primer to blur out my pores and makeup को थोड़ा सा long lasting बनाने के लिए. I'm gonna take this much quantity. And next I'm gonna conceal my dark circles, pigmentation, everything with this concealer from LA Girl. And I am gonna apply जहाँ पे भी मेरे pigmentation है सब जगह मैं इसको apply करूँगी थोड़ा थोड़ा. And will blend it out later with a brush. And और आप इसको स्पॉन्ज या ब्रश किसी से भी blend कर सकते हो. अभी मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से. आप ब्रश भी यूज कर सकते हो ब्लेंड करने के लिए. Okay, so moving on to the next step, I'm gonna use this Maybelline Super Stay Foundation. And इसको मैं अपने बैक ऑफ द हैंड में थोड़ा सा इतना लूँगी. एंड इसको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाइट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी रोज़ वाइब्स का रोज़ हिप ऑयल. 1 to 2 ड्रॉप्स मैं इसमें अप्लाई करके इसको मैं अच्छे से मिक्सअप कर रही हूँ. तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड आउट करूंगी सब कुछ. Moving on to the next step, I'm gonna use this Wet n Wild highlighting concealer. This one is in the shade light medium beige. तो इसको मैं अप्लाई करूँगी हाई पॉइंट्स पे just to lift up my face. So I'm gonna use this purple compact powder to settle in my base. I'm gonna take a fluffy brush and I'm gonna put this compact powder all over my face. Next I'm going to use this Sugar Dot palette.
and I'm gonna use the bronzer and the highlighter from this palette, that is this. Next, I'll use this blush from my Glamm, and this is just so pretty. I love this. I'm gonna fill my eyebrows with this Miss Claire eyebrow cake palette, and I'm quickly gonna fill in my brows. And for my eye makeup, I'm gonna use this my Makeup Revolution palette. This one is Division, Makeup Revolution Division palette. And I'm gonna pick these beautiful shades to create an eye look. ओके सो मैंने अपना आई लुक पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने लैशेस ऐड की हुई है, आईलाइनर, काजल, मस्कारा सब कुछ ऐड कर लिया है। नाउ आई एम गोना क्विकली मूव ऑन टू द लिपस्टिक, दैट्स द लास्ट पार्ट। एंड इसके बाद मैं अपना आउटफिट चेंज करूँगी, कुछ ज्वेलरीज ऐड करूँगी, एंड हाँ, ये लुक हो जाएगा कंप्लीट। सो आई एम गोना टेक दिस पर्पल मिनी लिपस्टिक्स, इट्स इन द शेड माई फर्स्ट गॉसिप, एंड आई एम गोना अप्लाई दिस ऑन माई लिप्स शेड। And now I'm gonna put this setting spray to lock my makeup all in place. Okay you guys, so that is all for this video. I hope you have enjoyed watching this video, and if you have, do not forget to give this video a thumbs up, a comment, and do share it and subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Until then, just take care, and yeah, I'll see you in my next one. Bye bye.